चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको को देख के बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि नाश्ते आप अच्छी तरह से पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। आई कैन सी फ्रॉम दी एक्टिविटीज दैट यू आर डूइंग सो वेल। और हजरा आपका म्यूट अनम्यूट हो गया, माइक अनम्यूट हो गया था, आप इसे म्यूट फाइनली कर लें। और ये है कि फिर से अनम्यूट हो गया हजरा, आपके बैक से आवाज़ आएंगी। अच्छा, तो मैं ये बता रही थी कि अब हमारे जो सेशंस हैं इंशाल्लाह ताला वो ज़ाहिर कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। हमने लास्ट टाइम जो है वो पास्ट सिंपल टेंस को देखा था, अंडरस्टैंड किया था, इससे प्रैक्टिस आपने बहुत अच्छा किया था। वी आल्सो डिड वन वीडियो जिसके थ्रू आप लोगों ने लिसनिंग की एक्टिविटी की थी। हाशरा काइंडली अपने आप अपना माइक म्यूट कर लें क्योंकि आपके से बैक साइड से ना बेटा फिर आवाज़ें इस पे आती हैं तो वो बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम लोगों ने पास्ट सिंपल को अंडरस्टैंड किया एंड देन वी यू कुड कम अप विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ पास्ट, हमने की थी वो भी। और उसके बाद हम लोगों ने इसको खुद से प्रैक्टिस किया एंड यू हैड कंप्लीट क्लैरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने इसके थोड़े से नोट्स देखे थे। हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है पास्ट कंटिन्यूस को। पास्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत ईजी है बिकॉज इट इज जस्ट लाइक जैसे आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस किया था उसी की तरह सिंपल बहुत हो जाता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब्स नए हैं दो, और वो नए हेल्पिंग वर्ब्स जो है जैसे प्रेजेंट में इज था और आर था, यहाँ पर वॉज और वर यूज होते हैं प्रेजेंट पास्ट में। पास्ट प्रेजेंट में हमने इस और आर यूज किया था ना, प्रेजेंट टेंस जब था कंटिन्यूस का, और आईएनजी बाकी सारे रूल्स फार्मर वही। लेकिन यहाँ पर हमने पास्ट में इस की जगह वॉज और आर की जगह वर यूज करना। अब क्या होता है कि डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट वर गोइंग इन द पास्ट, जो कि जारी थे गुजरे हुए जमाने में, पास्ट में ना पिछले जमाने में जारी थे, वो वाले हम इसके अंदर एक्शंस जो हैं उनको शो करते हैं। आपको पता है टेंसेस जो हैं एक्शंस के साथ एसोसिएटेड हैं, तो इसको इस तरीके से हम लेके चलते हैं। स्ट्रक्चर सेंटेंस का कैसे बनेगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, वॉज वर आएगा और आईएनजी आ जाएगा। और यहाँ से सारे राज हम सबको पता चल रहे हैं। और वो सारे राज किसके पता चल रहे हैं? हाजरा के ही चल रहे हैं। हाजरा आपकी सारी बातें हमें आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। आप म्यूट कर लें बेटा अपने आप को। आपके बैक से भाई बात कर रहे हैं शायद, या आई डोंट नो कौन कौन। आप अपने आप को म्यूट कर लें। मिस हैर आप इनको म्यूट कर दें, फिर पीछे से इनकी आवाज आ रही है अगर तो भी ठीक है, फिर रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगी। हाजरा बेटा म्यूट कर लेना माइक को आप अपने। म्यूट लिखा होता है ना माइक पे। शाबाश, गुड। अच्छा सॉरी जी। तो देन कंटिन्यूस में बता रही थी पास्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट कंटिन्यूस में एक्शंस वर गोइंग इन द पास्ट, जो कि हो रहे थे कब? गुजरे हुए समय शुरू हुए थे। क्या चीज आ जाएगी? सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट के साथ वॉज या फिर वर। वॉज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए जब एक से ज्यादा दो से ज्यादा लोग होंगे। यूसेज कैसे आएगा? यूज्ड फॉर एक्शंस हैपनिंग एट द स्पेसिफिक टाइम इन द, किसी गुजरे हुए ज़माने के स्पेसिफिक टाइम में गुजरे हुए ज़माने में वो एक्शंस हुए थे उनको हमने शो करना। पास्ट कंटिन्यूस की एग्जांपल्स ले लेते हैं थोड़ी सी। एग्जांपल्स में देखें तो रीडिंग, आई वॉज रीडिंग व्हेन द फोन रैंग, जब फोन बजा तो मैं पढ़ रहा था। या सिंपल आई वॉज रीडिंग, शी वॉज कुकिंग, दे वर प्लेइंग, शी वॉज स्टडिंग, वी वर वॉचिंग। जैसे भी आप करें। और अगले सेंटेंसेस जो हैं वो ऑब्वियसली इसकी कंटिन्यूएशन में बनते जाते हैं। जो भी जिस भी सिचुएशन को आप, इवेंट को, किसी भी सिचुएशन को जिसके बारे में आप बात करते हैं। जी किंजा, किंजा का भी म्यूट हो गया। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं तो समटाइम्स यू सडनली कम ऑन, कोई बात नहीं बेटा, इट्स ओके। तो समटाइम्स यू आर सडनली कम ऑन दिस, और उससे होता ये है कि जो बातें होती हैं पीछे से चल रही होती है ना, जाहिर है घर में लोग होते हैं सब, तो वो फिर हम तक पहुंच जाती है। और आपका दिल तो नहीं होगा ना खुद के सब बातें सुन ले। चलें कोई बात नहीं, ये भी फैमिली ही है। लेकिन बहरहाल, तो रीडिंग, कुकिंग, प्लेइंग, स्टडिंग एंड वॉचिंग टीवी, ये थोड़ी सी एग्जांपल्स जो हैं वो पास्ट कंटिन्यूस टेंस की हैं। बहुत सिंपल सा है। अब हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कर लेंगे पहले पास्ट कंटिन्यूस को समझने के लिए। मैं आपको नोट्स भी इसके भेज दूंगी जैसे हमने पहले किया था।
पास्ट सिंपल के भी भेज दूंगी और इसके भी। अब थोड़ा सा हम इनको यहाँ से स्टडी कर लेते हैं और फिर एक इंटरेस्टिंग सी और जो है इसकी एक्टिविटी भी करेंगे। अच्छा, देखें हम लोगों ने अभी जो किया था वो हमने पास्ट टेंस, ये मैं आपको भेज दूंगी नोट्स। पास्ट सिंपल में क्या था? पास्ट सिंपल में ये था कि हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऐसा था कि पॉजिटिव जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो सब्जेक्ट से बनेगा, और फिर पास्ट फॉर्म लगेगी, फिर सब्जेक्ट लगेगा। अच्छा, वर्ब टू मैंने इसलिए लिखा है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, ये आपको इजीली याद रखने के लिए। नेगेटिव कैसे बन जाता है? डिड नॉट बेस वर्ब और क्वेश्चन के साथ डिड सब्जेक्ट बेस वर्ब लग जाता है। अब चूज कैसे आता है? कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, yesterday, लास्ट वीक, in 2020, 2023 में भी। Examples: I visited my uncle yesterday. She did not go to school. Did you watch the movie? ये सारी एग्जाम्पल्स तीनों सेंटेंसेस की आ गई। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। आई विजिटेड माई अंकल yesterday, पास्ट की बात करें। पास्ट में ही जब डिड नॉट यूज करेंगे, जब नो का आ जाएगा तो डिड आपको याद है लगता है, और हमने नो लगा दिया, डिड नॉट गो टू स्कूल। डिड यू वॉच द मूवी? क्या आपने मूवी देखी थी? तो वो हमने डिड को बाहर रख लिया सेंटेंस। कंटिन्यूस हमारा आज का टॉपिक है, क्योंकि तो कंटिन्यूस में हमने क्या कहा? इसको पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत इतना ज्यादा कॉमन बात हमारे स्कूल्स में नहीं है या कॉलेजेस में नहीं है। आप इसको पास्ट कंटिन्यूस से याद रखें, बट मैंने लिख दिया। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सब्जेक्ट वॉज, वर, वर्ब, आईएनजी। और नेगेटिव कैसे बनेगा? वॉज और वर, नॉट। नॉट जब भी नेगेटिव है तो हमने नॉट लगा लेना है। बस ये याद रखना है कि कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो वॉज और वर है। क्वेश्चंस में वॉज और वर बाहर आ जाएंगे, बीच में सब्जेक्ट आएगा और फिर हम इसको यूज कर लेंगे। यूज में एक्शन हैपनिंग एट अ स्पेसिफिक टाइम इन पास्ट, टू एक्शंस हैपनिंग एट द सेम टाइम, बैकग्राउंड एक्शन फॉर अ शॉर्ट एक्शन विद पास्ट सिंपल। एग्जांपल्स: आई वाज रीडिंग एट 9 p.m. They were not playing football. Was she cooking when you came? ये सेंटेंसेस सिंपल सिंपल से हैं जो बन जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने एक एक्टिविटी छोटी सी करनी है, ज्यादा बड़ी नहीं। मैं एक वर्ब आपको लिख के दे रही हूँ। सॉरी। और वर्ड है ड्राइव। ठीक है, ड्राइव वर्ड है। आपने इसको प्रैक्टिस कर लेना है जल्दी से। पास्ट के आप इसके सिंपल में आप इसके तीनों सेंटेंसेस बना लें। एक एक सेंटेंस बना लें तीनों में से। एक आप इसका अफर्मेटिव बना लें, एक आप इसका नेगेटिव बना लें, और एक आप इसका जो है वो इंटरोगेटिव, या नीचे तो मैं क्वेश्चन लिखती हूँ। तो ये होगा क्वेश्चन। ठीक है जी, ये वाला। तो ये आपके पास है। यू हैव अराउंड 3 minutes आर इनफ। यू हैव 3 minutes टू डू दैट। आप स्टार्ट कर लें इसको जल्दी से, और जो है जनाब सेंटेंसेस लिखने शुरू कर दें। और फिर जाहिर है जब आप लिखेंगे तो बाद में हम पढ़ भी लेंगे इनको, लेकिन उसके लिए हम एक एक्टिविटी भी करेंगे थोड़ी देर में। अभी पहले हम इसको ज़रा सा कंप्लीट कर लेते हैं। चलें जी। कुछ लिखा है कायनात, यू हैव रिटन समथिंग बट आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड। आपने कुछ कहा है कायनात, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया ना। मैंने ये पूछना था कि अच्छा इनको अच्छा अच्छा, करना मैं क्या बता है। देती हूँ, डोंट वरी। बेटा वर्ब आपका ड्राइव है। टेंस आपको पता है, हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? जब हम पास्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो अभी एक्टिविटी ये है कि पास्ट सिंपल में आपने सिर्फ पास्ट सिंपल पे आपने 3 तरह के सेंटेंसेस बनाने हैं। और वो सेंटेंसेस जो हैं वो कौन से हैं? एक आपने सिंपल सेंटेंस बनाना है अफर्मेटिव, दूसरा आपने नेगेटिव, और तीसरा आपने क्वेश्चंस वाला बनाना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। जी कमल, सॉरी, कायनात आपको क्लियर हो गया? यू गॉट इट कायनात? अच्छा ओके, ठीक है बेटा।
दैट्स रियली नाइस टू सी। बहुत अच्छे अच्छे से जो है ना आपने sentences बना लिए हैं। Anika, we are doing the activity. If you have missed that, I'm going to write that down for you. You have got the verb, which is drive, and you have to make three type of sentences: affirmative, negative, and questions from the same. So I'm tracing it again. You can have a look from here, and you can make those. Okay? ओके So I मैम, think थैंक Shabana, you are most welcome. और बेटा कायनात वर्ब जो था ना जिसका सेंटेंस बनाने थे वो ड्राइव था। आपने रीड का बनाया ना, अच्छा है, लेकिन आपने जो है वो बनाना है एक्चुअली किसका। यू हैव टू मेक so sweet of you Uswa. I really liked you helping Anika for that. Great. अच्छा, so I have written it in the main chat group. और कायनात बेटा वर्ड वर्ब जो था ना वो रीड नहीं था, वो था ड्राइव। आपने ड्राइव से बनाने थे सेंटेंसेस, लेकिन चलें कोई बात मैम, मैं नहीं समझा, शायद किसी भी वर्ड के बना सकते नहीं। इसलिए कोई बात सॉरी। नहीं, ये तो और भी अच्छा है। ये तो और भी अच्छा है। वो डिफरेंट बना रहे हैं काफी लोग बीच में से। ड्राइविंग भी, नायरा ने भी ड्राइविंग का बनाया। और बाकी कुछ लोगों ने इसके अलावा भी। वो आप कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली ओके, कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन वैसे मैं आपको बता रही थी कि मैंने ड्राइव दिया था, आप कोई भी बना सकते हैं। क्योंकि ड्राइव में ना वो ड्राइव ड्रॉप ड्रिवन का चक्कर है। जो मैं इंटेंशन नहीं दे रही थी आपको, ताकि आप लोग इस तरह का प्रैक्टिस कर लें कि वो तीनों ही यूजुअल नहीं है ना। जिसमें डिफरेंट हो जाता है। चलें जी, दिस इज गुड वन। सही है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, गुड वन एमन, स्कूटी, दैट्स रियली नाइस। आई एम assuming you maybe you have a scooty, ना? No, ma'am, actually, I don't have. Assalamualaikum. People do drive scooty a lot. I find it very challenging in a way, but yes, people do Yes, that. ma'am, I wish I could have, but I don't. So very true. Likewise, likewise. अच्छा जी। इन्फिनिक्स इज विद होम, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। मैं आई थिंक मैंने रीनेम भी शायद किया था आपको। इन्फिनिक्स इज, हु इज इन्फिनिक्स, मैं भूल Hamdar जाती हूँ। Shep. सॉरी, इन्फिनिक्स से कौन किसने ज्वाइन किया, मैं भूल जाती हूँ हमेशा। आई फॉरगेट योर नेम। हमना ने तो नहीं किया हुआ, हमना अरशद, हाँ। आई सेड Hmm. एंड यू डिड इट। Yes, हमना मैंने किया है. हमना अरशद है जी, हमारी प्यारी सी हमना है। ठीक हो गया, ठीक। तो फोन का नंबर, फोन ही आ जाता है सामने आप जब रजिस्टर, क्योंकि जूम को अगर उस पर करते हैं तो वो पे। आप इसका पता है अपना क्या करना, इफ यू वांट टू, मतलब डिफरेंट में भी आप कॉल्स पे शायद होती होंगी। एंड यू इफ यू वांट टू, डोंट वांट टू योर नेम टू बी शोन टू एवरीबडी, तो आप उसको लर्नर स्टूडेंट कुछ भी ऐसे बना सकती हैं। दैट यू कैन डू बाय गोइंग इनटू जूम इन इट्स प्रोफाइल सेटिंग्स। तो प्रोफाइल में आप जाएंगी, वहां पे आपको सेटिंग्स में ना नेम को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, एंड देयर यू कैन डू। अभी तो खैर आप रीनेम कर लेते हो ना इसको यहाँ से, वो भी इजी है। बट जी. अदर देन ग्रेट। चलें जी, बहुत अच्छा हो गया, पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस हो गए। अब हमने क्या करना है, हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज करनी है, और वो ये करनी है कि अब इन्हीं सेंटेंसेस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है जो आपने बनाया। और जब आप कंटिन्यूस में चेंज करने जाएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो क्या है, वो ये होगी कि जो आपका वर्ब है उसके साथ आपने लगा लेना आज है ये पास कंटिन्यूस करने. पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है जी, बिल्कुल। हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस में, मैं अभी इधर एक ना आपके लिए एग्जांपल लिख रही हूँ ताकि आपको उसका आइडिया हो जाए। अब देखें, आपका सेंटेंस था आई ड्रोव अ कार, ठीक है।
अब कंटिन्यूस में कैसे बनेगा? आई वॉज was ड्राइविंग driving कार, है ना? the car अच्छा the जी, अब सेकंड आपने इसका जो है बना लेना है नेगेटिव। वो कैसे बनेगा? आई वॉज नॉट। ये सिंपल है ना, बहुत बना इजी है। आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार कर लें, चाहे वैसे कर लें, कुछ भी। और फिर तीसरा सेंटेंस क्या था? वॉज आई ड्राइविंग द कार। और अगर ये वॉज को नॉट के साथ बनाना है वो भी बन सकता है। वॉज आई नॉट ड्राइविंग वॉज आई नॉट ड्राइविंग द कार। ये इस तरह बन जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करने वाले हैं? हम ये करने लगे हैं कि आप लोगों ने इन्हीं को, सॉरी, आप लोगों ने इन्हीं वालों को, वो मैंने नोट को बंद किया तो ये भी बंद हो गया। तो आप लोगों ने इन्हीं सेंटेंसेस को जो अपने सामने देख रही हैं ना, आप लोग देख रहे हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को आपने जो है जनाब इसमें कन्वर्ट कर लेना है। आई वॉज ड्राइविंग, आई वॉज नॉट ड्राइविंग द कार, आई वॉज आई ड्राइविंग द कार, वॉज आई नॉट ड्राइविंग द कार। ये सेंटेंसेस आपने जो है वो बना लेने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये इजी है, बहुत इजी है ना, वॉज और वर के साथ। अच्छा, वॉज और वर में फर्क किया जाएगा दे के लिए। दे वर नॉट ड्राइविंग। एक से ज्यादा लोग होंगे तो दे वर नॉट ड्राइविंग। वी वर नॉट ड्राइविंग भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह यू के साथ भी यही लगेगा। ये नीचे मैं भी आपको दिखाती हूँ। वी वर नॉट, इसी तरह यू वर नॉट। जो आपका मेन एक इसका रूल है ना, वो हर जगह पर यही यही रहता है। वो उसमें चेंज नहीं आता। ये मैं भी आपको और भी एग्जांपल्स में दिखा थोड़ी देर में। I was driving my uncle's car yesterday. I was not driving my uncle's car yesterday. Was I driving my uncle's car yesterday? Was I not driving my uncle's car? Excellent उसका, बहुत अच्छे। Ali was driving the car, Ali was not, and Ali not driving. Very nice, very nice. वर्दा ने भी बहुत अच्छा लिखा है। Very good, शाबाश, good, good, excellent। अच्छा जी, बना लें, सब लोग बना लें। 5 मिनट्स ले लें, कोई मसला नहीं है, बिकॉज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अच्छा, अब एक और चीज भी आप कर सकते हैं। यू कैन इवन चेंज द वर्ब इफ यू विश। अगर कोई और, तो कोई मसला नहीं है, दूसरे किसी वर्ब का भी आप ये बना सकते हैं। कोई भी और वर्ब ले लें अपनी चॉइस का, लेकिन कंटिन्यूस के जो सेंटेंसेस हैं वो आप तीनों में बना लें। अफर्मेटिव, नेगेटिव और जो है इंटेरोगेटिव, जिन्हें हम क्वेश्चनिंग भी कहते हैं। वेरी नाइस, हमाद ने भी लिख दिया। आई वॉज सिटिंग नियर बाय बीच एंड फेल्ट अमेजिंग। अच्छा, गुड। ही वॉज नॉट ईटिंग लंच बिकॉज शी डिडंट लाइक। वेरी नाइस। वॉज शी ड्राइविंग द कार गिवन टू हर बाय हर फादर? बाय फादर के बजाय बाय हर फादर, ताकि स्पेसिफिक हो जाए। गुड वन। बिनते जिया ने लिखा दे वर ड्राइविंग, वर दे ड्राइविंग, दे वर नॉट। एक्सीलेंट, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा, मैं साथ साथ आपको बात भी एम्फसाइज करती जा रही हूँ, और अभी मैं आपको ना एक लिंक भी शेयर करूंगी आपके आज के सेशन के अंदर ही थोड़ी देर में, कि आप लोगों ने ना एक चीज अपनी जिस तरह मैं आपको कहती होती हूँ कि जैसे पानी पीना बहुत जरूरी है टू स्टे अलाइव, इसी तरीके से आपने अपना एक रूटीन, अपनी एक आदत बना लेनी है। तो ये कि यू हैव टू इंश्योर दैट यू आर टॉकिंग। ठीक है ना? ये You're बहुत not जरूरी audible. है। सॉरी हमार। You're not audible. आपकी आवाज बहुत कम आ रही अच्छा, अभी भी है। अभी सही आ रही थी कि शुरू से ही कम आ रही है? नहीं नहीं नहीं, about half a minute नहीं? ago. अच्छा अच्छा, वो आई थिंक मुझे लगता है ऐसा कि ये ना नेटवर्क का ही हम मसला कोई बना हुआ है, क्योंकि ये हमारी Okay. साइड पे भी ना केबल का इश्यूज आते हैं। थोड़ा सा सेंसिटिव सा एरिया है वेयर आई रिजाइड इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे
जरा लोकेशन की वजह से ना सेंसिटिविटी सराउंडिंग के एरियाज की है इन टर्म्स ऑफ Okay. जैसे ऑफिसेज है ना कुछ, तो उस वजह से आई हैव नो आइडिया कि क्यों ऐसे हो जाता है, बट ये हो रहा है खैर, और बहुत ज्यादा ही कुछ आजकल हो रहा है, और जितना मैं सुन रही हूँ ना तो वो कुछ ज्यादा ही चल रहा है। तो ये है, बट थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। हमारा उसवा ने No बड़ा issue. अच्छा बनाया। वाज यू आर मोस्ट वेलकम। वाजंट शी ईटिंग राइस 2 days अगो? हाँ बिल्कुल। उसवा ये राइस वाली बात करके ना आपने मुझे हंगर उस पे कर दिया, क्योंकि मैं आज शायद समहाउ हंगर स्ट्राइक पे लग रही हूँ बाय डिफॉल्ट, खुद ब खुद अपनी अपनी मर्जी से, अब मर्जी से आई मीन टू से, बिकॉज आई कुडंट गेट अ चांस टू टेक माय लंच टुडे। तो आज मैं इस वक्त सेशन के फौरन बाद डेस्परेट, आज तो मैं सोच रही हूँ अच्छा होता है मैंने रोजा रख लिया होता। हमाद बहुत अच्छा करता है, हमाद ने रोजे सारे माशाल्लाह जो है ना वो बाय हैबिट शायद पूरे किए हैं, और शवाल के भी रखे हैं। तो दिस इज अ वेरी नाइस थिंग दैट Yes, मोस्ट I ऑफ completed the 6 rosas, so I'm done with ओ it. शवाल के ना, वेरी गुड जी बिल्कुल। माशाल्लाह। आई न्यू इट एट दैट टाइम कि आप वो शवाल के रख रहे हैं, लेकिन खैर ये जी भी होता है बाय हैबिट भी, इफ यू आर फास्टिंग इन टर्म्स ऑफ लाइक कोई भी डे, जैसे मंडे के दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वेडनेसडे का सुना है मैंने ऐसा, मंडे वेडनेसडे, और yes, फ्राइडे का भी and I think it is रहा a है। really good habit if someone involves हाँ, in it. बिकॉज दिस It's a इज really good habit. सेल्फ एक्चुअली फ्रॉम द हेल्थ परस्पेक्टिव इट इज वेरी गुड फॉर यू फॉर अ ह्यूमन, लेकिन ये है कि आप सहरी प्रॉपर करें और इफ्तार भी प्रॉपर करें, दैट्स Yes, you're right. वेरी अच्छा जनाब, जबरदस्त। ये तो सबने बड़े अच्छे सेंटेंसेस बना लिया माशाल्लाह, चले ग्रेट है। ओ गुड वन। इंतजाम लिखा, आई वाज टेक्सटिंग माय फ्रेंड, वाज आई टेक्सटिंग माय फ्रेंड, आई वाजंट टेक्सटिंग माय, वेरी गुड। दे वर नॉट प्लेइंग सॉकर, ओ क्यों भाई, दे शुड प्ले। तो जुबेरिया ने कहा दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द रेन, ओ माय गॉड नाइस, वी वर प्लेइंग जस्ट, वी वर नॉट प्लेइंग बट जस्ट वाचिंग, ये भी अच्छा है जुबेरिया, नाइस वन। और was he playing or just pretending? हाँ गुड वन। अच्छा जी, हानिया ने तो अलग अलग करके लिख दिया। अफर्मेटिव, शी वाज कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, शी वाज नॉट कुकिंग डिनर व्हेन आई कॉल्ड हर, वाज शी कुकिंग व्हेन, सॉरी व्हेन, वाज शी कुकिंग डिनर व्हेन यू कॉल्ड। अच्छा ये आपने पूछा नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कॉल ही नहीं किया। अच्छा, ओहो, अब तो शमाइला ने बड़ा अच्छा लिखा है, शी वॉज बेकिंग अ केक। अच्छा, शी वॉज बेकिंग अ केक, मेकिंग बेकिंग दोनों ठीक है, शी वॉज नॉट बेकिंग अ केक, एंड वॉज शी बेकिंग अ केक, ठीक है जी। केक भी आ गया, और केक के फौरन बाद ही ना, एमन आपने बड़ा मैचिंग किया सेंटेंस उसके साथ, शमाइला के। आपने साथ ही लिखा है आई वॉज टेकिंग टी, आई वॉज नॉट टेकिंग टी, वॉज आई टेकिंग टी। तो उन्होंने केक बेक किया और आपने साथ ही जो है ना चाय नीचे बना ली। भाई कोई मुझे भी चाय दे दे। हाउ नाइस, वेरी गुड, गुड वन। चलें जी, ग्रेट हो गया। अब चलें, अब हम इसमें थोड़ा सा एक और शेयरिंग करती हूँ आपके साथ, और वो एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो क्लिप है, उसको सुनते हैं, वो इंटरेस्टिंग है, फिर उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ आज एक ऐप भी शेयर करूंगी जो मैंने आई थिंक प्रीवियस सेशन में शायद बात भी की थी। तो ये है जनाब पास्ट कंटिन्यूस की थोड़ी सी एग्जांपल। व्हाट वर यू डूइंग? आपने, आई एम श्योर आई हैव शेयर्ड द साउंड और आई हैव नॉट शेयर्ड द साउंड, लेट मी जस्ट चेक इट, आई फॉरगॉट आई गेस। अच्छा जी, आ रही है आवाज म्यूजिक की? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, ये अब खाने पीने की बात हो रही थी, मेरा कोई कसूर नहीं है, इस वजह से ये खुद ब खुद रेस्टोरेंट आ गया आप लोग के लिए, ठीक है ना? चले लेट्स सी व्हाट इज यस मैम। हैपनिंग। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग। आपने वही करना है, इसको गौर से सुनना है। आई माइट वुड बी प्लेइंग इट ट्वाइस, बट मेनली आई विल बी प्लेइंग इट once, and then after that you have to explain which tense was used, and you can explain it in your own words. Specifically, now you have got a very good understanding of basic tenses, और आज भी पास्ट कंटिन्यूस को खत्म कर रहे हैं, मोस्ट लाइकली परफेक्ट हम नेक्स्ट सेशन में करके साथ ही फ्यूचर स्टार्ट करके दो से खत्म कर लेंगे, और हमारे टेंसेस कंप्लीट होंगे, फिर हमारे थोड़े सी और चीजें रह जाएंगी, वो मैं आपको आज जाने से पहले। चलिए जी, सुनिए गौर से सब लोग, चलिए स्टार्ट।
Hey, look who's here. Sis, what a surprise. Hey, I didn't expect to see you here. Please join me. How was your day, Julia? Oh, I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony, drinking a cup of coffee. Ariba Malik मेरा है name. The video got stuck and glitches are coming. Ariba Malik मेरा name है. I'm जाने का टाइम हो गया. जाने का टाइम हो गया है. अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम गुड़िया। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज आ रही है? Yes मैम आ रही है. जी जी, अच्छा ठीक है। मैं पूछ रही थी कि जो अरीबा हैं, आपने अरीबा अनम्यूट किया था, तो क्या कुछ कहना चाह रही थी? No मैम. अच्छा ओके फाइन, मैंने समझा शायद कुछ कहना चाह रही हैं। अच्छा ठीक है, चलें आप मुझे बता दें बस कि इसकी वीडियो की वो आवाज आ रही है आपको? यस मैम। Yes मैम. और वीडियो स्टक तो नहीं हुई, चल रही है ना? वो भी Yes बता दें। मैम. चलें चलें, Yes, लेट्स चल रही। कंटिन्यू। Hey, look who's here. Sis, what a surprise. Hey, I didn't expect to see you here. Please join me. How was your day, Julia? Oh, I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony, drinking a cup of coffee. The sun was shining, someone was playing a violin in the street, and I was enjoying a beautiful afternoon. I was feeling hungry, so I decided to make spaghetti. But I realized that I didn't have any tomato sauce. So I went to the grocery store to buy some. After buying a few items, I finally found the tomato sauce. I was reading the label when the jar just slipped out of my hands and fell down. There was glass and red sauce all over the floor and splattered all over my shoes. I looked around and noticed that everyone was staring at me. People were smiling and whispering to each other. Soon I noticed that I was leaving a trail of red footprints through the store. I found a grocery store worker and let him know what I had just done.
I offered to help clean it up, but he declined. I was so embarrassed that I wasn't even looking where I was going. And I knocked over a display of chips. I was just standing there in shock. A manager was walking by me that very moment and noticed the mess I had made. I was expecting her to be angry, but she wasn't. She said they would take care of everything. She was smiling. Maybe she was thinking about how clumsy I was. Oh, poor you, sis. I'm sorry you had to go through this. It was just a bad day. And there's more. While I was waiting to pay the checkout, I realized I forgot my wallet home. I was mortified. Oh no. So what did you do? I apologized and left all my shopping there. Maybe you're too tired and stressed out. You should take a few days off from work and get some rest. Yeah, you're right. You know, I called you yesterday at about 8 p.m., but you didn't answer. What were you doing? You'll never guess what happened yesterday evening. I was sitting in the living room watching TV when I suddenly felt a strong smell of smoke. It was coming from the corridor outside our apartment. I opened the door and saw smoke at the end of the corridor. Mrs. Brown lives there. I grabbed the fire extinguisher and ran towards her apartment. I opened the door and there was a big fire. The flames were spreading quickly. I put out the fire as fast as I could. Then I saw Mrs. Brown in the living room. She was lying down on the floor. She was screaming for help. Help! Help! She was bleeding. I called the ambulance right away. Oh, poor Mrs. Brown. Is she okay now? Yes, luckily she's fine. But what happened? It seems that the fire was started by some candles that were burning in the living room. Mrs. Brown was dozing off when the fire started. She woke up and while she was trying to put out the fire, she fell down and broke her arm. She's really lucky to be alive thanks to you. You're a real hero. And where were you, Isabella, when all that happened? What were you doing? I was taking a shower. So I didn't notice anything. But when I came out of the bathroom, I felt the smell of smoke and knew something was going on. And I soon found out everything. I'm glad things turned out fine in the end. I'm so happy to spend such a wonderful evening with my brother and my sister-in-law. Talking about it. और आप इसको explain करेंगे? One more time for you. जी बता दें जल्दी से एक दफा है या ये से क्लियर हो गया आपको? किसने एक दफा और सुनना? बता ही नहीं रहे। चलें जी बताएं किसी ने और सुनना है? मेरी आवाज में जो पता है इसकी वजह से चली जाती है बिकॉज वो जब एक वीडियो प्ले होता है तो वो खुद ब खुद नेटवर्क का कंसर्न आ जाता है। बट एनीबॉडी वुड लाइक टू हियर इट? या इट्स फाइन ना? चलें गुड। चलें जी लेट्स स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द वीडियो। क्या हुआ इसमें, क्या बात हो रही थी? एनीबॉडी हु वुड लाइक टू स्टार्ट, जल्दी से रेज कर लें हैंड्स को। ओके अच्छा अनिका इज सेइंग वन मोर। ओह सो मेनी हैव सेड वन मोर टाइम। अब क्या करें? चलें फिर वन मोर टाइम कर लेते हैं। ठीक है मैं एक दफा इसको प्ले कर रही हूँ। चलें आई एम प्लेइंग इट वन मोर टाइम।
Hey, look who's here! Sis, what a surprise! Hey, I didn't expect to see you here. Please join me. How was your day, Julia? Oh, I had an awful day. It seemed to be such a lovely day at the beginning. I was sitting on the balcony, drinking a cup of coffee. The sun was shining, someone was playing a violin in the street, and I was enjoying a beautiful afternoon. I was feeling hungry, so I decided to make spaghetti. But I realized that I didn't have any tomato sauce. So I went to the grocery store to buy some. After buying a few items, I finally found the tomato sauce. I was reading the label when the jar just slipped out of my hands and fell down. There was glass and red sauce all over the floor and splattered all over my shoes. I looked around and noticed that everyone was staring at me. People were smiling and whispering to each other. Soon I noticed that I was leaving a trail of red footprints through the store. I found a grocery store worker and let him know what I had just done. I offered to help clean it up, but he declined. I was so embarrassed that I wasn't even looking where I was going. And I knocked over a display of chips. I was just standing there in shock. A manager was walking by me that very moment and noticed the mess I had made. I was expecting her to be angry, but she wasn't. She said they would take care of everything. She was smiling. Maybe she was thinking about how clumsy I was. Oh, poor you, sis! I'm sorry you had to go through this. It was just a bad day. And there's more. चलें जी हम इसको यहीं तक पहले रखते हैं and we will be speaking about the first story which happened. और आप पहले वाला इसका जो है ना first part को बताएं और फिर हम इसके बाद second पे चलते हैं. And you can raise your hands and tell me. And I have got a raised hand from Ayman, Fatima Zohra, and Usman Maha. So ठीक है Ayman, first you take the lead, then Hadia has also raised her hand. चलें आप बताएं. हम इसको फर्स्ट स्टोरी को पहले करते हैं फिर सेकंड जो इंसिडेंट हुआ था उससे इसके बाद. जी अमन, ओवर टू यू. Okay, ma'am. This was a story of a boy a story of a boy who went to a restaurant with his wife, and suddenly he met his sister. His wife's name was Julia, and Julia asked her sister-in-law what was her day. Then Julia said he was sitting in balcony and he was craving for a coffee, and there was the sun was shining and she felt hungry. Suddenly she felt hungry and she craved for a spaghetti. Then she realized that she don't have a tomato sauce in her house. Then she went to a grocery store, and when she found a jar of tomato sauce, the jar slipped from her hands and splattered all over the floor. And then she noticed everybody was staring at her, and people were smiling and whispering each other. And then when she walked, she realized she is leaving footprints of tomato sauce. Then the manager came. Then she offered to help. She was so embarrassed. When she walked again, she knocked over display of chips.
Then the manager came, and she was thinking that manager will be angry at at her, but the manager was not angry. Very And it was, nice. Very nice. कितना opposite है ना? Unexpected. Don't you think so? You know, the yes, manager ma'am. was so Yes, calm ma'am. and quiet, and there were no worries, or nothing, and they took it like very normal. ठीक है Yes. बच्चे, बहुत अच्छा है मन, थैंक यू सो मच। चलें जी उसका, आप बताइए क्या हुआ इस छोटे से बच्चे के, बच्चे जैसे बंदे के साथ। चलें, वुड लाइक टू से जी, प्लीज प्लीज टेल मी। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, Julia and her brother met at the restaurant. They were happy to meet each other. Her brother's friend asked Julia about her day. Then Julia tell her that she was sitting on the balcony and she was having a cup of tea, or sorry, coffee. Then she starts feeling hungry. She starts thinking to make spaghetti, but she was out of tomato sauce. She thinks that she should go to the store. Then she was going to the store to buy a sauce. She picked up the jar of sauce, but it slipped out from her hands. She was feeling embarrassed because she messed up there. She noticed that everybody was whispering on her. She asked the worker he could help her, but he refused. She again starts walking towards another line, but she again messed up. Then the manager came of that store and made her comfortable. Then she went to the counter and she was out of cash. Then she again felt embarrassed and then she left the store after apologizing. No, no, no worries at all. A little bit of things can be, I mean, the things can be a little bit different. It's fine, no problem. But the explanation is really, very awesome to know that. Thank you so much, Uspa. Now, Hadia, Mispa, Varda, and Anika, one by one. Hadia, please, you can tell now. And as much story you can recall, no issue with that. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? Walaikum assalam. I'm good, alhamdulillah. How about you? Alhamdulillah. Thank you. Great, great. Ma'am, it was restaurant and Julia met her brother and sister-in-law and tell them about her story. She was sitting in the balcony and drinking the cup of coffee, and there the children were playing in the street, and she was enjoying. And then she was feeling hungry and decided to make spaghettis. And then she realized that paste of ketchup she realized out of tomato paste. She went to the grocery store and when she bought tomato ketchup paste, and the jar spelled her hand and laid down. She feel very impressed, and then she was very impressed. She see that the people were smiling and whispering to see her. She noticed that when she walked, the red spot of ketchup was spreading in the store. She feel very impressed, and she asked grocery man store to help her, but he could not notice. When she saw the manager of grocery store coming toward them, she realized that he was angry with her, but he was not angry, but he was smiling and
gave smiling and relaxing her when she realized that that she was not money, and then she come home from restaurant without buying anything. Very nice, Zabardast, very good. It's really nice done. Two, three things only I would just like to share with you. और वो ये है कि जैसे आप felt कहेंगे ना क्योंकि we are talking in the past, तो बस वो छोटी छोटी चीजें हैं, and that will come with practice. But mainly, I highly appreciate the to speak so confidently in front of so many people. और वो आपने बात हमेशा याद रखनी है, that will happen. ठीक है? Excellent. Very good. Okay, ma'am. चलो जबरदस्त. अब तो कौन who would like to take the turn? अस्सलाम इसमें वालेकुम। मिसबा. अच्छा चले अनीका. कौन बताएगा पहले? कौन मिस चलिए अनीका आप बता दें, मिस पहले म्यूट करिए. Okay, ma'am. जी. Ma'am, the story was about a girl. She is telling her story. She was sitting at balcony and enjoying coffee. She decided to make spaghetti, and but she found that she also needed ketchup. So she went to grocery store to buy some ketchup, but the ketchup jar fell down from her hand, and she was very embarrassed because manager and everyone was looking towards her. She offered to clean the floor, but unfortunately, she dropped some packets of chips on floor, and then she was again embarrassed, and then she was also mm, embarrassed in that ठीक है. sort. Very nice. Excellent. Very good. Excellent. Very nice. चलें जी मिसबा. Now your turn. Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम. First of all, past continuous tenses used in this video. A Hmm. girl is describing her day and tell her brother and sister what was happened with her, and she told that one day ago she was sitting in a balcony and she was enjoying the music, and suddenly she started she was hungry, and she went in the kitchen and started um, um, make some spaghettis for her, but she saw that tomato sauce was the jar of tomato sauce was empty, so she decided to went in a store, and after and when she went in a store, she and checked the and pick up the tomato sauce. The jar was picked slipped out her hand, and she was felt very she was felt very embarrassing, and she went to a worker for help, but the manager suddenly manager came there, and she smiled and said to get I think she was angry and he was get some more thing for eat, but when she was in, to go and she was go to Good. Thank you. वहां से मैं भूल गई कि जब वो गई थी पेमेंट के लिए ठीक when है. she Good. thank you ma'am. गुड है. चलें जी म्यूट Thank you कर ma'am. लें. बेशक बहुत अच्छा. वेरी नाइस. चलें जी वर्दा आपकी टर्न आ गई है. बहुत अच्छा. वेरी गुड. ग्रेट है. Assalamu alaikum, ma'am. How are you? वालेकुम अस्सलाम. आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. हाउ अबाउट यू? Alhamdulillah, ma'am. And this चलें story जी. was about Jolan and his brother and sister-in-law. They were sitting in a restaurant, and there she told her brother and sister-in-law that she was sitting in the balcony and drinking a cup of coffee. And the sun was shining, and she was enjoying a beautiful afternoon.
Then she was feeling hungry, so she decided to make spaghetti. Then she realized that she did not have any tomato sauce. And she went to the grocery store, and there, after buying a few items, she finally found tomato sauce. Or she was there, she slipped out of the tomato sauce slipped out of her hand and fell down, and the glasses were and red sauce were all over the floor and splattered all over the shoes, all over her shoes. Or she looked around and noticed that everyone was staring at her, and people were smiling. Then she noticed that she was leaving to footprint through the store, and and she found that grocery store worker just come to her and she offered to help clean it up, but he declined. And she was so embarrassed that she was not looking at where she was going. And then she's standing there in a shock, and manager was walking to her, but and noticed to her, but she was expecting that she is angry, but she was not. She said they would take care of anything, and she was smiling. And she said, so sorry. She said, she said sorry to her. And when she pay check out, but she realized that she forget her wallet at home, and she was apologized and left all shopping there. Very good, Barda. बहुत अच्छा, excellent. And I appreciate more than anything else your confidence, because you could say it and you were talking fluently. बस थोड़ा सा जो past tense है, जैसे looked हो गया, और फिर जहाँ पे was, जब आप looking up बता रही थी उसमें, तो वो थोड़ी सी चीज़ों को ना जब आपने बोलना है, क्योंकि देखिए अभी सबसे अच्छा ये प्लेटफॉर्म तो हम हमारा है ही, इसलिए कि आपने प्रैक्टिस, तो थोड़ी सी चीज़ें इस पे आपने थोड़ा सा और एम्फेसाइज करना है. अदरवाइज यू वर स्पीकिंग सुपर ऑसम, वेरी नाइस, जबरदस्त, बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस के साथ स्टोरी भी बिल्कुल सही रिलेट की है. ठीक है ना. थोड़ा सा टेंसेस को जहन में रख लेना कि अच्छा मैंने यहाँ पर अभी अगर वॉज कहा है तो वॉज के साथ मैंने फॉर श्योर आईएनजी को फिट इन कर देना है, क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब है जो कि आईएनजी के लिए यूज होता है, वरना बेचारा आईएनजी अकेला रह जाता है, आपको पता है. ठीक है ना. तो इस तरह की चीजें बस एक दो थी जो आपने इसमें से, बाकी सब एब्सोल्युटली हो. ठीक है बेटे. Thank you, ma'am. अच्छा जी, अब Thank you. हमारे पास, यू आर मोस्ट वेलकम. अब फातिमा तो जहरा आ गई हमारे पास. जी फातिमा. In this story, a girl was sitting in the restaurant. She saw her brother and her wife and his wife. She met them and very happy. She her brother wife say, how was your day? She say, I was sitting on the balcony and enjoying the day. She was feeling hungry. She go to kitchen to make spaghetti. She saw that tomato sauce was finished. She go to grocery shop. She buy a few items, and she finally saw a jar of tomato sauce. She accidentally slipped the jar of tomato sauce, and it fell down. She was very upset, and everyone was whispering. She go to she saw a worker, and she say, I accidentally spilled tomato sauce, and she accidentally throw tomato sauce. Can I clean it? So the worker declined, and she
she accidentally throw the chip packets of chip and the manager was walking from there. She said that I accidentally throw some chips packet. So the manager, she was thinking that manager will be very angry, but the manager said, I not get angry. When she go to the counter, she checked that she saw that her money, she forgot her wallet to go home, and she apologized and went to home. वेरी गुड फातिमा, इतना कॉन्फिडेंटली, इतना अच्छे से और फ्लुएंटली आपने बताया। एक्सीलेंट बच्चे, स्पीकिंग पे तो 100 आउट ऑफ 200 आ गए। बस थोड़ा सा पास्ट टेंस को और प्रैक्टिस करना है ना इंशाल्लाह ताला, है ना बेटा? थोड़ा सा बस पास्ट टेंस को, क्योंकि आप जब हम बता रहे होते हैं तो स्टोरी तो हमेशा पास्ट में होती है ना, इसीलिए हम पास्ट टेंस पढ़ते हैं, क्योंकि वो चीजें हो गई होती हैं जैसे आप बता रही थी, इट हैपेंड एंड ऑल। तो वो जो आपने जहाँ जहाँ पे जैसे बताए थे, तो आपने बस एक तो जगह पे टेंस जो था वो मिस कर दिया, वो आपने इसको ऐड कर लिया, ठीक है ना बेटा? फिर इंशाल्लाह ताला इसको एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपने वो करना है। लेकिन आई एम अमेज्ड, और सबसे ज्यादा मुझे आपने जो सरप्राइज किया है ना फातिमा, वो पता है क्या सरप्राइज था? आपने कोई छोटी छोटी डिटेल्स में मिस नहीं की, इतनी तो मुझे भी याद नहीं थी, आपसे सुन के याद हुई है। वेरी नाइस बेटा, आई एम प्राउड ऑफ यू। और आज मामा से गिफ्ट ले लेना अच्छा सा, बाबा से, मामा से, या बड़ी जो बहना है आपकी उनसे, जो भी बड़ा है घर में, ठीक है? और मैंने फिर पूछना है अगले सेशन में क्या गिफ्ट मिला था, ठीक है ना? डन? सरशाह से भी लेना। ओके मैम। मैम ये सरशाह की भतीजी है माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। बस ये फिर आप जो मिस नवाल है ना, उनसे पूछ लें। नवाल, इनको आपने फातिमा को बहुत अच्छा सा गिफ्ट दिलवाना है कोई भी, ठीक है ना? इंशाल्लाह। चलें जी, ये डन डील इधर को हो गई है। आप सही है फातिमा, अब तो आ ही जाएगा कुछ बहुत अच्छा सा, ठीक है? चलें जी, हमारे पास, यू आर मोस्ट वेलकम। अब हमारे पास है इकरा और जवेरिया। चलें जी, इकरा, अक्सा भी है, 1 बाय 1 जल्दी जल्दी बता। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चलें जी, मैम स्टार्ट करें। थैंक यू। I think I'm not good in English, but I will try. चले चले, मुझे पता है बहुत अच्छा आने वाला है। I know. So much, ma'am. Thank you. In this video, we are watching a story by a girl. He tell about herself. He was sitting in a balcony and he enjoying music, and suddenly he felt hungry and craving for spaghettis, and he found that there is no ketchup in her house, and she went into a market and carry a ketchup jar, and suddenly the ketchup jar fell down in her hand, and there spread a mess all around. She embarrassed for this, and suddenly the manager was coming toward her. She think that she angry with her, but she surprised when the manager treat her very well, and after that she forget their purse in the house, and she feel more embarrassed, and after that she sorry. कोई नहीं, it's okay. Even you can add story by your own self also if you are stuck up somewhere. कोई इशू नहीं है. It was very nicely done, इकरा. बस थोड़ा सा पास्ट टेंस को, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उसको बस थोड़ा सा और आपने जिसे कहते हैं ना केयरफुली देखना है. अदरवाइज इट वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट, जबरदस्त. अच्छा जी, अब आ गई हैं अक्सा हमारे पास. जी अक्सा. अक्सा आप कर लें अनम्यूट. अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. It is the story of Julia. She met her brother and her sister-in-law in the restaurant. Then her sister-in-law asked her
about the day, how her day was going. Uh, then after she tells about her. Sorry, ma'am. नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है अक्सर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बहुत अच्छा, जबरदस्त। और हमें आपने इतनी प्यारी प्यारी सी एक छोटे से जो एंजल्स होते हैं उनकी आवाज भी सुनाई है उसकी। और वो मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपको शायद लग रहा है शोर है, बट शोर नहीं है, ये बहुत रौनक वाली प्यारी प्यारी आवाजें, अल्लाह जिंदगी करे सबकी। चलें ठीक है, बस कोई इशू नहीं है अक्सर, नेक्स्ट वाले में बात बता ले। बहुत अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। चलें जी, जवेरिया की टर्न आ गई है। जी जवेरिया। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। Julia met to her brother and sister-in-law at the restaurant. They were talking with each other about how they spent their day. Julia told them about her awkward story. She told them that she was drinking coffee in his balcony and enjoying the piano. She felt hungry and went to kitchen to make spaghetti, but she realized that tomato sauce was finished, so she went to the market to buy tomato sauce. She bought few items and finally she found tomato sauce. The jar tomato sauce slipped her hands and spread on the floor. She was feeling so awkward. Everyone was laughing off to her, and then she made another mistake and she dropped the packets of chips. Then the manager come to her. She was frightened that manager was angry on her, but manager said that then manager said that don't worry, they will manage. Excellent, very good Javeria, superb, very good. And there was not even a single mistake in the tense which you were using. Excellent. बस इसी तरह से you all have to be a little Thank you, conscious. ma'am. You are most welcome बच्चे. You have to be little more cautious about it. That's it. चलें जी, महा की टर्न है, फिर इसके बाद हम आज का सेशन करते हैं। बाय। Assalamu alaikum, ma'am. वालेकुम अस्सलाम। Ma'am, story related to a girl which her name is Julia, who's sitting in the restaurant. Then she met with her brother and sister-in-law, and and her sister-in-law asked to her about her day. Then she explained about her day that her day was awful. And he told the story of the day to her brother and sister-in-law. Then she was sitting in the balcony and listening the music and enjoy coffee. Then she felt hungry. She went to kitchen and decided to make spaghetti. Then she noticed that there is not tomato sauce in her kitchen. Then she went to grocery shop to buy tomato sauce. When she buy tomato sauce, the jar of tomato sauce was slipped in her hand, and there is a messy everywhere. She felt embarrassed, and she went from there, and she was noticed that everyone is whispering on her, and now she was walking, and she felt like there's there's messing everywhere, and an awful situation, again an awful situation, that she was mess up the chips packet of chips, and she sorry to her. And other awful situation was that she was forgot her wallet to her house. She apologized them and went to her home again. Excellent, very good, Ma. बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा, very nice. And I really love the confidence of everybody. I love the way you guys explained it. बाकी जो टेंसेस हम इसीलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा हो जाता है समटाइम्स, बट इट्स ओके। अच्छा, मैंने चैट में पढ़ा है कि उबैद भी पढ़ना चाह रहे हैं। जी उबैद, आप बिल्कुल पढ़ लें, फिर हम सेशन को
फिनिश करते हैं, आप थोड़ा सा बता दें क्योंकि वी आर ऑल अस्सलाम वी आर डन विद द टाइम, बट कोई नहीं, आप थोड़ा सा बता लें, थोड़ी सी अस्सलाम स्टोरी वालेकुम बता दें, मैम, बाकी की फिर हम। वालेकुम अस्सलाम उबैद, how are नाइस you? टू हियर यू। आई एम फाइन, थैंक यू, अल्हम्दुलिल्लाह। We saw a story. In this story, there is a girl and her name is Julia sitting on the chair. Suddenly, one couple was entering the restaurant, and her couple's husband asked to Julia that I was surprised to see you here. And Julia also asked that I also surprised to see you here. Please join me. Then this couple joined the Julia. Then her brother asked that what was the day, and then Julia replied that there was an awful day. It was a really good beginning in the of the day. The sun was shining, and I was taking the cup of coffee in the balcony, and the sun was shining, and I was someone playing violin in the street, and I was enjoying really. Then I feel really hungry. Then I want to make spaghetti. Then I saw that the tomato sauce was finished. Then I decided to buy from the grocery shop. Then I went to the grocery shop, and after buying something, I was found the tomato sauce, and I take the tomato sauce, and I was reading the label and the price of that tomato sauce. Suddenly, he fell from my hand. He slipped from my hand and felt on the and suddenly he fell from my hand and felt on the land and on my foot. I was Everyone was smiling on me, and I was really feeling embarrassed. Then I want to go. I found the worker that work in the grocery shop. I asked him what I do, but I also asked him to I can help you, but he declined. Then I want to buy some chips. I go to the chips label. Suddenly, the chips label the all chips fell down, and then I saw the manager was coming to me. I think that manager was anger on me, but that's not. Then I go to the then I go to the to bill that all thing that I can buy from the grocery shop. Then I realized that my wallet is in the home, and I feel again embarrassment. Very nice, Ubaid. I like the way you confidently spoke about the story. But as you in the beginning started that you are actually portraying the role of that girl, and that's why you were saying that I went, and likewise. But you have Yeah. to only ensure, beta, that we are using past tense while we are relating the story. ठीक है ना? Thank you, बाकी ma'am. स्टोरी आपकी बिल्कुल सही है, बट ये है कि उसको सिर्फ आपने सारे सेंटेंसेस को पास्ट टेंस में, आपको पता है पास्ट में क्या यूज करते हैं? जी आई वेंट टू द स्टोर हो जाएगा। फिर जी अगर आप वॉज यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट फॉर्म में जैसे गो लगाया तो गो के साथ आई वॉज गोइंग आईएनजी आ जाएगा, और Okay, पास्ट में okay. सिंपली आप सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करें। ठीक Okay, है? ma'am. सो Okay, ma'am. नो Thank you. प्रॉब्लम, वेरी नाइस, यू अटेम्प्टेड इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम रियली रियली हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड। चलें जी, Thank you, ma'am. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसी तरह से आप लोग अपना पार्टिसिपेशन रखेंगे। मैंने आज प्लान किया था कि हम जो है आपको मैं वो लिंक दे दूंगी, बट नो वरीज, अगले सेशन में करते हैं, और इसको यहाँ प्रैक्टिस भी क्योंकि हमने करना है। आज आपकी ये प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी थी जो आपने की है। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन आवर नेक्स्ट सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मे अल्लाह बी विद ऑल ऑफ अस ऑलवेज। थैंक यू सो मच, Hafiz. यू आर द बेस्ट। Allah Hafiz. थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। इतनी प्यारी सी आवाज़ आ गई मुझे ये। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, उमर और फातिमा दोनों। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।